Hello everyone. I hope you all are fit, fine, healthy, and well. Doing well, right? Okay, so this is part 2 of the chapter Respiration in Organisms. Okay, from the unit 3, The World of Living. And here in this video, I will discuss two major parts of the respiration, that is, how it occurs in animals kingdom and plants kingdom. Okay, so थोड़ा सा मैं रिकैप दे देती हूँ वॉट एवर वी हैव लर्न टिल हियर. हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन क्या होती है. तो रेस्पिरेशन जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है जिसमें लिविंग बीइंग क्या करते हैं, डिराइव करते हैं एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडीज. ओके, then respiration are of two types: aerobic respiration जहाँ पे presence of oxygen is required, and anaerobic respiration जहाँ पे absence of oxygen is there. Okay, now we have also seen about the fermentation, isn't it? Like, and then we have seen about the difference between aerobic and anaerobic respiration. Then मैंने बताया था about how breathing is different from respiration, right? Then I also taught you about what is respiratory system and how it works, and about the alveoli and the diaphragm. We have also discussed in the last video about the inhalation and exhalation, how diaphragm contracts and how it relaxes. Then difference between inhalation and exhalation we have discussed. कितना difference होता है. Now we'll start from the respiration in animals kingdom. So even though respiration जो है वो common characteristics of all living organisms, but बहुत कम animals होते हैं या living organisms होते हैं जो कि use करते हैं lungs for respiration. Okay, so यहाँ पे कुछ respiratory organs दिए हुए हैं जो different living organisms use करते हैं for their exchange of gases. ठीक है, so first is lungs. It is found in higher animals such as those who have complex body designs like human beings, birds, snakes, lizards, dogs, tiger, etc. गिल्स क्या होती है? तो गिल्स जो है ये एक like respiratory organ होती है which is present in fish, shark and most other kind of aquatic animals, and they respire through this gills only. गिल्स जो है वो present होती है both the sides of the fish's head. ठीक है, अगर आपने फिश कभी देखा होगा, like most of you I hope have seen fishes, right? तो उनके fins होती हैं, fins होती हैं, I hope you have seen the fins, जिसके हेल्प से वो मूवमेंट कर पाती हैं. तो उसी के पास प्रेजेंट होता है दिस गिल्स. ओके, विच इज कवर्ड विद बोनी फ्लैप विच इज कॉल्ड एज ओपेक्यूलम. ठीक है, गिल्स जो है they are abundantly supplied with capillaries that allow, यानी कि गिल्स जो है वो apparently supplied होते हैं with capillaries that allows the oxygen to enter and carbon dioxide to leave the breast stems. जैसे ही fish अपना मतलब तुम लोग देखते होगे that फिशेस का मुंह खुलता है, वो पानी को अंदर लेती हैं. ठीक है, देन पानी को अंदर लेती हैं, देन व्हाट दे डू थ्रू द ओरल कैविटी दे पास द वाटर थ्रू देयर गिल्स ब्रिंगिंग इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ओके, अब बात करते हैं थोड़ा बहुत फ्रॉग के बारे में. तो दो हम लोग जानते हैं कि एडल्ट फ्रॉग जो होते हैं एंड टोड जो होते हैं वो ब्रीथ करते हैं थ्रू देयर लंग्स, बट जो यंग टेडपोल्स होते हैं they have gills, they use their gills to respire at that time. Next is moist skin. हम लोगों ने इतना तो बहुत पहले से ही पढ़ रखा है, like earthworm is there, right? तो कुछ animals होते हैं like earthworm use their skin for their gases exchange. Okay, a similar method is used for frogs, toads, sea turtles, sea snakes to respire underwater, isn't it? Okay, फिर आता है trachea and spiracles. तो ट्रैकिया क्या है और स्पिरिकल्स क्या है? तो ग्रास ऑफपर्स के अंदर, कॉकरोचेस के अंदर बहुत छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं, स्मॉल ओपनिंग्स. दोज आर कॉल्ड स्पिरिकल्स. ऑल ओवर देयर बॉडी इट इज़ प्रेजेंट एंड दीज ओपन इनटू एन इलैबोरेट सिस्टम ऑफ ट्यूब्स विच इज़ कॉल्ड एज ट्रैकिया. एंड जो गैसेस एक्सचेंज होता है इट टेक्स प्लेस between the air that flows through the trachea and the body, isn't it? Okay, I hope you have understood till here. तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि एनिमल्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है थ्रू लंग्स, गिल्स, मॉइस्ट स्किन्स, ट्रैकिया एंड स्पिरिकल्स.
अब हम लोग also देखेंगे about the respiration in the plants kingdom, but there is something which you have to see, that is here, water passing through the gills in fish. कैसे pass हो रहा है? You just go through the diagram. It is given in the PDF. From the description you can download it. Okay, now facts to be known to you. ठीक है, तो प्रिंसिपल जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत से एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जो कि रेस्पायर करते हैं थ्रू गिल्स, बट देयर आर सम ऑफ द एनिमल aquatic organisms like dolphins and whales. They have lungs for their breathing purpose, not they don't have gills, okay, although they live in water. This is one of the reason they are placed in same group of the animal kingdom along with human, dogs, cats, tigers, etc., and are called mammals. Understood? Okay. Now, respiration in animal as well as animal bochi. Respiration in plants kingdom. Okay. So कैसे respiration होता है stomata में, right? Plants use their stomata for the respiration purpose, right? So plants के पास tiny openings होते हैं, tiny pores होते हैं, which is stomata, that is used for the exchange of gases, and they are mostly found in the surface of the leaves, and each stomata, जो भी स्टोमाटा है वो गार्ड किए जाते हैं बाय सेल्स विच इज कॉल्ड एज गार्ड सेल्स, एंड गार्ड सेल्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं टू रेगुलेट द साइज ऑफ द स्टोमाटा. हमने सुना होगा बहुत बार कि या फिर नहीं भी सुना होगा, तो प्लांट क्या करते हैं, दे रिस्पायर ऑल द टाइम, ठीक है, बोथ डे एंड नाइट. हाउएवर ड्यूरिंग द डे टाइम ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड by photosynthesis could be used by plants for the purpose of respiration. It is only during the night जबकि ऑक्सीजन जो है प्लांट्स अपने अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करते हैं, ठीक है, ये सिर्फ रात के टाइम में होता है. दैट इज वाई इट इज सजेस्टेड टू नॉट टू स्लीप अंडर अ ट्री एट द नाइट टाइम, इजंट इट? ओके, अब रेस्पिरेशन थ्रू रूट्स देख लेते हैं. तो मेरे को पता है कि कुछ लोग ना कुछ लोग तो मतलब भाई सुंदरबंस तो गए ही होंगे. तो सुंदरबंस में अगर गए थे तो मैंग्रोव ट्री भी देखा होगा, इजंट इट? तो मैंग्रोव ट्रीज जो हैं, दीज ट्रीज ब्रीथ करते हैं थ्रू देयर रूट्स विच आर स्टिल्टेड, as you can see in the picture given here. मैंग्रोव ट्री का पिक्चर दिया हुआ है और यहाँ पे ओपन एंड क्लोज स्टोमाटा का भी इमेज दिया हुआ है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. मैंने स्टोमाटा यानी कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया है इन द चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, नॉट एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स. ओके, you just go and watch it to understand more about the photosynthesis procedure. There in detail I have discussed about the stomata. Okay, now let's come back to our part which is respiration through roots. तो हम लोग देख सकते हैं कि सुंदरबन के मैंग्रोव ट्री को कैसे वो स्टिल्टेड हैं and they respire through their roots. Okay, now they usually get this oxygen from the soil which has air tapped inside it as it mixed with water. It is mixed with water. Even in our homes we should never put too much water in our potted plants. क्यों भाई, क्यों नहीं pot करना चाहिए too much water? As it might inhibit the root from breathing, and in turns क्या हो सकता है कि एक adversely effect हो सकता है कि हमारे plant के ग्रोथ में भी रुकावट आ सकती है. दैट इज वाई इट इज एडवाइज टू एवरीवन. ओके, now go through the diagram, you will understand more about it. And here is the end of the chapter. ये बहुत ही छोटा सा बहुत ही easy chapter था. I hope you all have gone through this chapter and it is very easy. Thank you everyone for watching the video and I hope you have liked and subscribed my channel.